Okay, good morning, students. And today we will discuss the networking questions from this year's sample paper. Start from the very beginning. We will discuss the full sample paper. Okay. Okay, students. In first question, find the invalid identifiers. Beta identifiers are user-defined names, say variable name. So there are some rules regarding a variable name. They can't be keyword. It can't be start with a number. There should be no any space. So in my name, it is a valid. True. This is a keyword because boolean value true and false t and f these two characters are capital, so true. This is not a, it is a not a identifier. Second name, this is incorrect. In my name we can use underscore, we can't use other special characters, so this is valid. So here is invalid is true. And second name, these are invalid because start with the numeric value, and second one is true is a keyword, so both of these are invalid. Next is, given the list L, values are given there 3 6 82 5 7 11 92, and you will have to there is a command print L to 5. So this is a range is given. For solving this type of question, look at here. First, you will have to use indexing. So in this question, first of all, write down the index in your rough work. Start from 0, then 1, then 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And remember one thing, sometimes there is a negative indexing is also. Negative indexing start from the end. This is -1, then -2, -3, like this. So question is print 2, print L 2 to 3. Look at here, from 2 the value is 6, from 5 value 7. But remember one thing, we will take value 1 less than the last value. So last value is 5, here is last value is here, so we will take the value for from 2 to 4, not 5. 5 will be excluded. Okay, so output will be 6, 82, and 5. So this is the output, this is the answer of this. Next is the full form of CSV, common separated comma separated value, comma separated value. This is the full form of CSV. Next is, identify the valid arithmetical operator in the Python. So question mark, there is no any operator here. Less than symbol, it is a relational operator. 2 times star, this is called exponent. This is a arithmetical operator. And is a logical operator. So the question is, identify the valid arithmetic operator. So here is arithmetic operator is exponent. So it is used for power. It means if we want to use 2 power 3, we will use 2, 2 times star 3. 2 power 3 means 8. Next is, there is a one statement is given. Remember one thing, you will have to find out which one is incorrect. So remember student, this is tuple. When we use braces, this is tuple. When we use square bracket, this is list. When we use curly bracket, this is called dictionary. So in tuple, we can't change the value. In list, we can't change the value, but in tuple, we can't change the value of elements. So here we print
T1, so T1 will display 12, no any issue. Here, look at here, we are changing the value of the element. This is not possible. We are changing the value of T2. This is not. If it is a list, in case this is a list, in that case it is possible, but this is not a list, this is a tuple, so this is not possible. And max and the length function both are applicable in the case of a tuple. So invalid is B1. Next is, write a statement in Python to declare dictionary with the key as 1, 2, 3 and value as Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Wednesday. Look at here. We will use here, take the dictionary name D. So D is equal to curly bracket. First we will use key, then colon, and then the first value is Monday. Because it is a text value, this is a value, key value. Key first, first key 1, then value is Monday, and after that comma, second is 2, and it is a key and its value is Tuesday, and after that there is 3 is a key and the value is Wednesday. And after that curly bracket close. So this is the way to declare a dictionary. So this is the question from your sample paper. We are solving the sample paper. So this is the answer of the question number 6. Now next is question number 7. A tuple is declared, and what will be the value of sum t? So sum function will add all the element. 2 plus 5, it is 7, 7 plus 6, it is 13, 13 plus 9, 22, and plus 8, it is 30. So answer of this question is 30. So tuple will, the sum function, when we apply on a tuple, it will add all the elements. Next is, name the built-in function or method that return an absolute value. So remember one thing, in first chapter when we discussed the functions, there are some inbuilt functions. So there is one function ABS. That function return absolute value. So answer of this question is ABS, curly bracket start, curly bracket close. This function will return us absolute value. Absolute value means if we give the negative value, it will return us positive value. So it will remove all these symbols. If it is a minus symbol is before the value, it will remove that. Next question is, name the protocol that is used for sending the emails. For sending the emails, there is a SMTP protocol is there, simple mail transfer protocol. Is it clear? Next is, there is again one question from your networking. Here is a one person uploaded the fake, created a fake profile, and then after that there are some comments on that. So the type of cyber crime. So look at here, it is a question number 10. Here is, there are there are some terms like cyber bullying, cyber stalking. So whenever we create any fake profile, and after that that person whose name we create the profile receives some comments, this is called cyber stalking. So you will have to write down the term used for that particular situation. Next is, in SQL, name the clause used to display the tuple in ascending order.
Okay, students, when we want to display the data in ascending or in descending order, the clause name is order by, and after that you will write down the field, and after that if we want to display in descending order there is a DESC, and if you want to display in ascending order no need to give any character, otherwise ESC for ascending. But here is because we want to display the data in ascending order, so there is only order by clause. Which clause is used to set the condition in select statement? Where clause. ये clause होती है सारी की सारी, order by, group by, where, ठीक है, ये सारी की सारी clauses हैं. तो वो पूछ रहे हैं कि किस clause से you can see the data in ascending order. Next question is, in SQL what is the use of null operator? Beta, null operator means there is no any value. Whether it is used in any language, null means no any value. It means it is not a zero, it is not a space. Null means no any value. Next is write one aggregate function. बेटा aggregate function वो होते हैं जो हमें single value return करते हैं in case of SQL. Suppose we use sum function, we use average function, we use min function, we use max function, we use count function. These functions return only single value, so that's why these are called aggregate functions. तो SQL में जब आप लगाते हो, यूज करते हो, in case of look at here, select sum in bracket suppose salary from employee. It means the sum total of salary column will be, all the value will be added and it will return single value. This is called aggregate function. So write any one aggregate function. This is sum function is here, average function is here, min function, max function, count function. These are aggregated functions. Next is, which of the following is a DDL commands? In SQL, there are basically three types of commands. Look at here. One is called DDL. This is called data definition language. Second one is DML. This is called data manipulation language. And last one is called DCL. This is called data control language. In DDL, you create tables, you delete the tables, and you modify the table structure. तो इसमें आएगा कमांड्स होंगी क्रिएट टेबल, देन अगर आपने टेबल को डिलीट करना है देयर इज अ ड्रॉप टेबल, और इन केस अगर आपने कोई उसमें स्ट्रक्चर में चेंज करना है, आपने एक नया कॉलम ऐड करना है, यू वांट टू ऐड न्यू कॉलम्स, इन दैट केस देयर इज अल्टर. ये सारी डीडीएल क्वेरीज हैं डेट जिसका स्ट्रक्चर के साथ लिंक है. टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना मतलब ड्रॉप से, और टेबल के में कोई चेंजेस करनी स्ट्रक्चर में, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अल्टर. नाउ इन द केस ऑफ डीएमएल, this is used for changing the this is linked with the data inside a table. So table में जो डाटा है उसको अगर आपने डिस्प्ले करना है, that is a select command. If you want to insert the data, there is a insert command. If you want to delete the data, there is a delete command. And if you want to change the data, there is update command, update query. And DCL, this is used for creating the users. जैसे for example when you start MySQL, you fill the user ID and password. ठीक है? In that case, DCL queries are used. So because DCL queries are not in your syllabus, in your syllabus there is only DDL and DML queries. So look at here. In question, which command is DDL? DDL में कौन सी कमांड्स आएंगी? क्रिएट टेबल, ड्रॉप एंड अल्टर. तो इसमें चेक करो, सेलेक्ट तो DML क्वेरी है, अल्टर इज ए DDL क्वेरी.
insert or update DML query. तो answer is which of the following is DDL command? So alter is a DDL command, data definition language. तो उसमें create, drop and alter. So next is name the transmission media best suitable for connecting the hilly stations. Beta, in hilly station or in remote areas, it is very difficult for to use cables, because there is a lot of digging work will be there, and in mountains or hilly stations digging work is not possible. In that case, we can use only unguided media. These may be radio wave, microwave और satellite. और सबसे जो फास्ट होता है दैट इज सैटेलाइट, बट सबसे इकोनॉमिकल है रेडियो वेव और माइक्रोवेव. ये रेडियो वेव क्या होता है बेटा, देयर आर सम एंटीनास, वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर लगे होते हैं, वो सिग्नल को पास करते रहते हैं. जैसे इन द केस ऑफ एनी इन द केस ऑफ दूरदर्शन देयर इज एंटीना लगा होता है ना, जब आपके पास नकोदर रोड के ऊपर आगे जाके है, तो वहां पे जो सिग्नल वो कैच कर रहा है फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली से आगे आपको ब्रॉडकास्ट कर रहा है. बट इन द केस ऑफ, so in this case we can write satellite. so इस केस का आंसर होना चाहिए satellite. next is identify the valid declaration. okay students, here we use square bracket, and square bracket is used in the case of only list. अगर braces होती तो this is a tuple, अगर curly bracket होती तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होती है डिक्शनरी. तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज की है, इट मींस दिस इज अ लिस्ट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिस्ट. और अगर आपके पास होता है डबल कोट्स में वैल्यू, दैट इज ए स्ट्रिंग वैल्यू. लुक एट हियर, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. दिस इज ए डिक्शनरी, और अगर मैंने लिस्ट बनानी होती तो मेरे पास इस तरीके से बनती, स्क्वायर ब्रैकेट like this, or if I use braces here in place of square bracket, तो ये बन जाता टपल. यहाँ पे आ जाना था टपल, ये टपल बन जाना था अगर मैं यहाँ पे ब्रेसेस यूज करता. और in case I use only double quotes, like look at here, so this is called string. तो यहाँ पे इसका इस क्वेश्चन का आंसर है list. So this is the valid declaration of L. So declaration is given, and ये किसकी declaration है? This is the declaration of a list. Next question is, here is a one string is given, and you will have to write down the output of a print square in a bracket name 3:10. 3:10 means all the elements starting from the index 3 up to index 9, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वैल्यू इज 10, तो इंडेक्स जाएगा 9 तक. तो आपने यहाँ पे जब भी इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी इंडेक्सिंग आपने लिखनी है पहले. तो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी. आफ्टर दैट you will have to use index. We know that there are two type of indexing, one is positive, another is negative. तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव इंडेक्सिंग दी हुई है, तो वी विल यूज पॉजिटिव इंडेक्सिंग. इफ देयर इज एनी स्पेस, स्पेस इज ए करैक्टर, तो उसको भी आपने करैक्टर एज्यूम करना है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन 1 तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास है 3 to 10, तो 3 स्टार्ट फ्रॉम P, ठीक है, एंड अप टू 9, तो 9 तक ये है C. तो ये वैल्यू आपके पास, द हाईलाइटेड वैल्यू विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. इज इट क्लियर? ठीक है. अगर 10 दिया हुआ है तो अप टू 9, अगर वहां पे 8 दिया होता तो 7 तक. तो लास्ट वैल्यू से आपने 1 कैरेक्टर लेस. नेक्स्ट इज
write the query to display the list of table stored in database. तो इन केस बेटा अगर आपने किसी भी डेटाबेस में टेबल्स देखने हैं, तो लुक एट हियर, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं यहाँ पे। तो वहां पे कमांड होती है शो टेबल। तो लुक एट हियर, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो डेटाबेसेस, तो ये डेटाबेसेस शो करते हैं। अगर मैं किसी डेटाबेस में एंटर कर रहा हूँ, सपोज स्कूल इज देयर, तो कनेक्ट स्कूल। और अगर मैंने स्कूल के अंदर जो टेबल्स बने हैं, इफ वी वांट टू सी द लिस्ट ऑफ टेबल्स, आई विल यूज शो टेबल्स। So command to see the list of table is show tables. Is it clear? Any doubt in this? Okay, next is write the expanded form of Wi-Fi. Okay, students, for Wi-Fi, there are three terms we use: Wi-Fi, Wi-Fi hotspot, and WiMAX. कई बार इनमें डिफरेंशिएट भी आ जाता है। Wi-Fi is used for a wireless signal in a short range. The full form is Wi-Fi fidelity. और ये होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, विद इन यू कैन से विद इन ए हाउस यू कैन यूज द वाईफाई सिग्नल्स, बट इन केस वी वांट टू यूज द वाईफाई इन ए स्मॉल कैंपस, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी स्कूल में अगर हमने यूज करना है, तो देयर इज ए वन टर्म वाईफाई हॉटस्पॉट। और अगर आपने एक टाउन को, एक छोटे से सिटी को ही अगर आपने वाईफाई करना है, तो वाई मैक्स इज देयर। सो वाईफाई हॉटस्पॉट एंड वाई मैक्स। सो वाई मैक्स क्या करेगा, एक पूरे के पूरे सिटी को या एक छोटे से टाउन को वाईफाई इनेबल्ड कर देगा। वाईफाई हॉटस्पॉट एक पूरे के पूरी एक कैंपस को, लाइक लवली यूनिवर्सिटी, तो उसको वाईफाई पूरा इनेबल करेगा। एंड वाईफाई दिस इज बेसिक फॉर डोमेस्टिक यूज, तो ये पूरे के पूरे एक हाउस को वाईफाई इनेबल कर सकता है, या एक छोटी सी बिल्डिंग को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of type of table constraints will prevent the entry of duplicate rows? तो बेटा in SQL there are constraints. Constraints किसे कहते हैं बेटा? there are some conditions जो आपके टेबल में वैलिड एंट्री को एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप वहां पे चेक कंस्ट्रेंट यूज करते हो। तो यहाँ पे एक यूनिक कंस्ट्रेंट होता है, यूनिक लेस डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, नल वैल्यू मींस आप उसको अगर स्किप कर दो तो एक्सेप्ट कर लेता है। एक आपके पास प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, वो आपको डुप्लीकेट वैल्यू भी रिसीव नहीं करता, ना ही नल वैल्यू, मींस आपको एंट्री करानी कंपलसरी है। तो अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्राइमरी की, बिकॉज इन यूनिक की देयर इज नो एनी डुप्लीकेट वैल्यू, बट यू कैन स्किप द फील्ड। आप उस फील्ड को एम्प्टी छोड़ सकते हो, खाली छोड़ सकते हो, पर प्राइमरी की में आप उसको एम्प्टी भी नहीं छोड़ सकते। तो अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्राइमरी की। दिस कंस्ट्रेंट विल prevent the entry of a duplicate rows. Next is आपने देयर आर सम टर्म्स आर गिवन देयर, तो आपने इसको असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो स्मॉलेस्ट वन आपने पहले रखनी है, ठीक है। तो बीपीएस, देन केबीएस, उसके बाद एमबीपीएस, एंड देन जीपीएस एंड टीबीपीएस। और रिमेंबर वन थिंग, if the first letter of character of your unit is capital, that stands for byte. अगर स्मॉल में है तो बिट है,
तो अगर यहाँ पे देखो बीपीएस बी स्मॉल में है तो बिट पर सेकंड, और अगर ये के कैपिटल में है तो किलो बाइट, बाइट्स है ये, बिट नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इसकी फुल फॉर्म आ जाए तो अगर के कैपिटल में है तो किलो बाइट, बाइट लिखना है, अगर के स्मॉल में है तो किलो बिट लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, यहाँ पे एक एसक्यूएल में एक डेटाबेस माई स्टोर दिया हुआ है और एक टेबल दिया हुआ है, कुछ फील्ड्स दी हुई हैं और नीचे एक टेबल दिया हुआ है। अब उसके साथ कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू डिक्लेयर द प्राइमरी की। बेटा वही फील्ड जिसमें डाटा यूनिक है तो वी कैन सेट एज ए प्राइमरी की। और रिमेंबर वन थिंग, और इन एनी टेबल वी कांट सेट मोर देन वन प्राइमरी की। कभी भी किसी भी टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं आ सकती। क्लियर? और अगर एक से ज्यादा फील्ड यूनिक आ रही है, सपोज आपने ले लिया आधार कार्ड नंबर एंड पैन, तो दोनों यूनिक वैल्यू देते हैं, तो उन दोनों को हम कहेंगे कैंडिडेट की। उनमें से दोनों में से किसी एक को बना देंगे प्राइमरी की, और दूसरी की जो प्राइमरी की नहीं बन सकी, दैट की विल बी, यस बेटा, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव की। सो लुक एट हियर, तो इस टेबल में आपके पास है आइटम नंबर, आइटम नेम, एस कोड एंड क्वांटिटी। तो हियर लुक एट हियर, आपके पास यहां पे आइटम नंबर और एस कोड दोनों हमें, एस कोड में हमारे पास वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है 22 22, ठीक है। तो ये एस कोड हम इसको प्राइमरी की नहीं बना सकते, वी कैन सेट प्राइमरी की ऑन आइटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके बेटा, डिग्री एंड कार्डिनलिटी, यस एनीबॉडी, व्हाट इज डिग्री? ये आपका उसमें क्वेश्चन भी था उसमें इन हाफ ईयरली एग्जाम, डिग्री एंड कार्डिनलिटीज। सात्विक? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज डिग्री ऑफ ए टेबल? Sir, rows. यू आर नॉट श्योर? जसकरण? हाँ जी सर। डिग्री एंड कार्डिनलिटी? बेटा दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन बेटा, आपके लास्ट इसमें हाफ ईयरली एग्जाम में भी था। दीक्षा? So yes, these are rows and columns. डिग्रीज आर? Rows. यस बेटा, दी नंबर ऑफ रोज, नॉट ए रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। कार्डिनलिटी इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपने काउंट करने हैं, फर्स्ट को नहीं लेना, ठीक है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रोज है, तो 7 आपकी डिग्री होगी। अगर आपके पास कॉलम 1 2 3 4 वो कार्डिनलिटी, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज ए इंसर्ट, आपने इंसर्ट कमांड लिखनी है और डाटा आपके पास गिवन है। तो लुक एट हियर, इंसर्ट में सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसर्ट इनटू, then we use table name, table name is store, then values, और ब्रैकेट में you will write all the values in serial order of their columns, ठीक है। और if that is a string value, उसको आपने सिंगल और डबल कोट्स में लिखना है, न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं। तो उन्होंने यहाँ पे वैल्यू दी है आइटम नंबर 2000, आइटम 2010, दिस इज ए न्यूमेरिक वैल्यू। देन there is a notebook, that is a string value,
then there is a third value is s code is 25. 25 is there, but there is a one problem here. The fourth value is not given, quantity is not given. इसका मतलब क्वांटिटी हमने फिल नहीं करनी, तो आपको इस कमांड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वांटिटी नहीं दे रहे, यहाँ पे हम 3 वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। इन रियलिटी देयर आर 4 कॉलम्स। तो आपने क्या करना है, स्टोर के साथ आपने फील्ड के नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फील्ड थी आइटम नंबर, तो आइटम नंबर नहीं, ये फील्ड के नेम है ना, तो कॉमा, सेकंड जो हमने वैल्यू इंसर्ट की है दैट इज आइटम नेम, और थर्ड जो वैल्यू हमने इंसर्ट की है दैट इज एस कोड। तो एस कोड यहां पे आपने लिखना है एस कोड, तो ब्रैकेट क्लोज। ये तब होता है जब आपने कोई वैल्यू को स्किप करते हो, ठीक है। तो यहां पे हम वैल्यू को स्किप कर रहे हैं, एक कॉलम की वैल्यू को हम नहीं दे रहे। इन दैट केस इंसर्ट क्वेरी आपके पास इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। नहीं आएगी तो, पर किरत यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप यहाँ पे 3 वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो। इन टेबल वी हैव 4 कॉलम्स। हाँ जाएगी ऐसे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा एक्सेप्ट, क्योंकि उसने क्या करना है, पोजीशन को मैच करना है। जैसे इन द केस ऑफ योर फंक्शंस, जितने वेरिएबल्स एक्चुअल वेरिएबल होते हैं उतने फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर मैच होने चाहिए। अगर नहीं होगा तो एरर आती है। इन द सेम वे हियर विल बी एरर। तो आपकी क्वेरी कुछ नहीं, वो सिर्फ ब्लैंक एम्प्टी आ जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है। और इस केस में आपके पास क्वांटिटी में एम्प्टी वैल्यू आएगी, नल वैल्यू मींस नो वैल्यू, उसमें वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबे वांट टू रिमूव द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। बेटा डेटाबेस को डिलीट करने के लिए देयर इज ए ड्रॉप कमांड, ड्रॉप टेबल कमांड, ठीक है। तो अगर डिलीट कमांड लगाते हो, रोज डिलीट होती हैं, टेबल डिलीट नहीं होता। इफ वी ड्रॉप डेटाबेस, ये कमांड होगी। अगर आपके पास अगर आपने कोई कंडीशन लगानी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डिलीट कमांड यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने टेबल डिलीट करने के लिए आपको कहा है, तो ये देयर विल बी ड्रॉप टेबल कमांड विल बी देयर। नेक्स्ट इज जो लास्ट कमांड है, ये आपके पास इनकरेक्ट है, डिलीट कमांड, बट इनकरेक्ट कमांड है। डिलीट कमांड सिर्फ रोज को डिलीट करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ अबे वांट टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। बेटा जब भी आपने टेबल के स्ट्रक्चर को देखना है, आप देखना चाहते हो इसमें कौन कितनी फील्ड्स हैं, उन फील्ड के नेम क्या है, उसके ऊपर कौन सा कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। तो लुक एट हियर, अगर हमने यहाँ पे अगर किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना होता, तो DESC डिस्क्राइब, देन stu 2, देन कर्ली ब्रैकेट, DESC, ठीक है, डिस्क्राइब, इट स्टैंड फॉर डिस्क्राइब, देन टेबल नेम। सो लुक एट हियर, ये बता रहा है इसमें देयर आर ओनली 2 फील्ड, रोल नंबर, नेम, उसकी टाइप क्या है, इंटीजर एंड कैरेक्टर। उसमें आपने नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, यस, क्योंकि हमने उसको प्राइमरी की नहीं लगाई हुई, तो नल वैल्यू इंसर्ट हो सकती है। तो ये हमारे पास, हाँ ये आपके पास की कौन सी लगी हुई है, इसके ऊपर यूनिक की लगी हुई है। तो इसलिए पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर दिया। सो इफ यू हैव एनी डाउट, so tomorrow we will continue with this from question number 23 onward. Okay, so if you have any doubt, discuss with me better.